Now let's understand conditional statements in Python. Okay, so चलो देखते हैं ये conditional statements होते क्या हैं. So the conditional statements in Python perform different actions depending on whether a condition is true or false. मतलब क्या है? So what conditional statement is used for? Say suppose if you have one condition, okay, say suppose अगर आपके पास कोई value है, okay, you have one value, say suppose a is equal to 100, okay. Now say suppose you want to check whether a is greater than 50 or not. If it is greater than 50 तो मुझे कुछ और प्रिंट करना है. अगर मेरे a की वैल्यू ग्रेटर देन 100 नहीं है, ग्रेटर देन 50 नहीं है, तो कुछ और प्रिंट करो. मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव वन पर्टिकुलर वेरिएबल विच इज नथिंग बट a एंड नाउ यू वांट टू चेक अ कंडीशन वेदर द वैल्यू ऑफ a इज ग्रेटर देन 50 और नॉट. तो अगर आपको चेक करके कुछ डिसाइड करना है कि हाँ, if the value of a is greater than 50 then print this, if value of a is less than 50 then print this. so ये क्या है, ये हम लोग यहाँ पे condition देख रहे हैं. so in order to check a condition you have conditional statements, and in Python you have total 3 conditional statement: if statement, if else statement and elif statements. So all of these statements are used to check a condition. Okay, so let's take an example of first particular thing, which is nothing but a if statement. But before going towards your example, let's understand what exactly a first conditional statement is, which is nothing but your if statement. As you can see, there are total 3 conditional statement: if statement, if else statement and elif statement. So we are going to learn this one by one. So very first we are going to understand if statement. So if statement is used for a decision making. Okay, so all of these operations, or you can say all of these conditional statements are used for decision making only. Okay, so let's take a look at syntax. So as you can see, expression over here is nothing but your condition. Okay, so this particular thing is nothing but your condition or expression. So this condition can either be true, okay, or it can be what, it can be false. So if this particular expression is true, then these statements, whatever the statements are written over here, these statements will be executed. So as you can see, there is a space over here. Okay, as you can see, there is a space over here. So this is nothing but indentation. This is known as what, indentation, and this indicate that whatever I write in this particular line, it is considered that ये सारे statements जो रहेंगे वो किसका part रहेंगे, मेरे if statement का part रहेंगे. Okay, so this is known as what, indentation, or you can say a block of if. So in Python the block is created by putting some indentation. Okay, so indentation मतलब क्या, कुछ नहीं, एक space डालना रहता है and that's it. So आप normally in C languages block of if is created with curly bracket, right, and inside curly brackets you write multiple statements. But in Python there's no such concept. If you want to create a block of something, then you have to use what, you have to use this type of indentation. Okay, so as I said, these statements will be executed only if this particular expression is evaluated to what, evaluated to true. तो चलो एक example देख लेते हैं. Say suppose I have one variable, so I will ask user to enter some number. Okay, so I will create one variable and I will take an input because I want to ask a user for a number. I will display one prompt by saying that enter your number, and whatever the number is I want to convert it into, say suppose, integer. Okay, because I want to deal with the integer right now, so I will convert it into integer. Now what I have to check is, I have to check whether the value of num is greater than 100 or not. If the value of num is greater than 100, तो मुझे display होना चाहिए yes, the value is greater than 100 करके. Okay, so चलो, for that I will use if statement. Inside if statement I have to
specify a condition. This condition can either be true or false. So right now I will check whether num is greater than 100 or not. Okay, you can put this parenthesis if you want. Okay, so this particular thing will check whether my num, the value of num, is greater than 100 or not. Okay, so if it is greater than 100, then मुझे क्या करना है, मुझे प्रिंट करना है कि num is greater than 100 करके, बस ये ऐसे टाइम पास मुझे एक स्ट्रिंग यहाँ पे पास करने हैं. लेट्स सेव दिस प्रोग्राम. ओके, इफ डेमो डॉट py से मैंने इसको सेव किया. एक बार इसको रन करते हैं. ओके, सो एंटर योर नंबर. से सपोज अगर मैंने यहाँ पे डाला 700. So now the value of num becomes what? The value of num becomes what? 700. And now your Python will check whether 700 is greater than 100 or not. So right now this condition will evaluated as true, and when the if statement is evaluated as true, then the if statement are executed. So right now there is only one if statement, which is nothing but your this particular thing. Okay, तो ये मेरा क्या होने वाला है, execute होने वाला है. Let's enter this, and as you can see num is greater than 100 मुझे मिल गया. ये क्यों हुआ? ये तभी execute होता है. The statement inside if block is executed only if this particular condition is ट्रू, अदरवाइज वो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होने वाले. फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको फिर से सेव किया, फिर से रन किया. अगर मैंने अभी यहाँ पे डाली रहती व्हाट से सपोज 80 डाला रहता, तो मुझे आउटपुट में कुछ भी नहीं मिलता. वाई कुछ भी नहीं मिलता? बिकॉज ये कंडीशन क्या हो गई, मेरी फॉल्स हो गई, इसलिए. सो व्हेन यू पुट 80 ओवर हियर, तो अगर आपने 80 यहाँ पे डाला, तो वैल्यू ऑफ नम बिकम्स व्हाट? वैल्यू ऑफ नम बिकम्स 80, एंड 80 इज ग्रेटर देन 100 है क्या? 80 is greater than 100? No, that means this particular thing is now evaluated to what? Evaluated as a false. Okay, so this is known as what? Simple if statement. Now you have one more concept called as if else statement. ओके, तो बाय द वे अभी मैंने बोला इफ स्टेटमेंट तभी एग्जीक्यूट होता है जब मेरा ये पर्टिकुलर कंडीशन क्या हो, ये पर्टिकुलर कंडीशन ट्रू हो तभी. नाउ से सपोज यू हैव टू थिंग्स. ओके, चलो देख लेते हैं. ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड इफ एल्स स्टेटमेंट्स नाउ. सो the statement itself tells that if a given condition is true, then the execute the statement present inside of if block. ये तो मुझे मालूम है, अगर मेरी कंडीशन ट्रू है तो हमेशा if block एग्जीक्यूट होगा, एंड इफ द कंडीशन इज फॉल्स देन कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट होने वाला है? देन द एल्स ब्लॉक विल बी executed. So now let's understand this by taking one example. Okay, चलो. So if else कैसे लिखना रहता है ये मैं आपको बता देता हूँ. अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये राइट होने वाला है स्क्रीन के ऊपर. नाउ आई वांट टू डिस्प्ले num is less than 100 if this particular thing is evaluated as a false. So for that you will use else statement over here. So you will simply write else followed by a colon and then print num is less than 100. Okay, so this particular thing, ये जो है ये पर्टिकुलर चीज, दिस इज नोन एज इफ ब्लॉक. ये जो है इसे कहते हैं इफ ब्लॉक एंड दिस इज नोन एज व्हाट? एल्स ब्लॉक. योर इफ ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड ओनली इफ दिस पर्टिकुलर कंडीशन evaluated to true. If this particular thing evaluated to false, then the statement of else will be executed. ठीक है, तो else कभी execute होता है अगर मेरी ये कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स हो गई तो. ओके, सो यू कैन नॉट डायरेक्टली राइट एल्स. इफ यू वांट टू यूज एल्स देन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज इफ स्टेटमेंट टू. लेट्स सेव दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम. नाउ लेट्स ट्राई टू पुट सम वैल्यू which is less than 100. से सपोज मैंने डाल दिया 90.
Okay, so now what you can see, I am getting num is less than 100. so that means ये जो condition थी, ये condition मेरी क्या हो गई, ये condition मेरी false हो गई. And whenever the condition which is mentioned inside if statement evaluated to false, then the statement which are present inside a else statement will be executed. तो इसीलिए मुझे आउटपुट में क्या मिला, आउटपुट में मिला num is less than 100. Now you can see this is your syntax for if else statement. Okay, so ये syntax में आपको clearly दिखाई देगा. This is your if and this is your else. Okay, so this particular thing, this is known as your condition or expression which can be true or false. If this particular expression is evaluated to true, then the block of if code is executed, which is nothing but this particular block. But अगर ये expression, ये particular expression क्या हो गया, false हो गया, then the block of else will be executed. Okay, so it is clearly mentioned over here, block of code to execute if condition is true. मतलब क्या, यहाँ का block तभी execute होगा when this particular condition is true, else the block of code to execute if condition is what, false. Okay, so this is nothing but your if else statement. Okay, जो ट्रू रहेगा तो भी कुछ ना कुछ परफॉर्म करता है, एंड फॉल्स रहेगी कंडीशन तो भी कुछ ना कुछ तो परफॉर्म करता है. अभी हम लोग इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स देखने वाले हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में. थैंक यू फॉर वॉचिंग. सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स.